All right, so within your Cambridge syllabus of phobia, right, we have three disorders again. एक जो phobia है, then उसके like different categories वगैरह वो भी हैं. Uh, so you have studied phobia before in your AS as well, if you remember the button phobia study, right? So that's a good basis to understand what's the phobia, and you can also use the button phobia study because it's a case study, right? And in that case study, they come up with a treatment of how to treat that button phobia. So when you talk about the treatments for biophobia, right, especially in the debate section of paper 4, section C, where you have to quote different researchers to come up with a debate, you can use that additional study as a plus point in your research as well. You can quote the study of Silverman and Silverman when you want to debate regarding certain treatments. So we're going to keep that aside, but we can refer to that study as well. Anyways, regarding the treatment for phobia, if you remember the schizophrenia chapter, right, we talked about VR, virtual reality, Freeman study. So when we started Freeman study, we remember that we talked about the background of other studies which used VR as a treatment. In that you have three studies referring to VR used to treat different kind of phobias: height phobia, PTSD, uh, fear of heights, and fear of flying. So you can refer to VR studies section as well in the background section. So they're different. So phobia has many cures, many treatments, but that's that. And now let's get into what do we call phobia. So when you talk about phobia, right? We're gonna start off with specific phobia. Now the word specific phobia. आपकी आवाज नहीं आ रही. अब नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही. अब आ रही है? अब आ रही है? Are you able to hear me? You. अब आ गई. All right. जी. Alrighty. All right. Okay. So when we talk about specific phobia, right? The word specific, right? It really means specific. So in specific phobia, please remember that you are gonna be scared, right? Phobia is fear, scared. Scared of how many things? Scared of one thing, object, or one situation, right? Specific. So that's what specific phobia means. Keyword, one object or one situation. Object as in it could be anything like dogs, cats, colored black, or situation as in height, being in close places, circumstances like this. But you're gonna be scared of one specific thing or situation. That's what specific phobia means. So you have heard of button phobia, right? Button phobia is a specific phobia. Fear of blood, specific phobia. Fear of spiders, specific phobia. Fear of heights, specific phobia. So different specific phobias have their own names. Arachnophobia. I have a question. What is that? Inconsistent voice. Hold on. Can't see it. We can change the Wi-Fi. All right. Am I audible now? Awaaz aa rahi? All right. So what was the last thing you heard? Different types of phobia. All right. The different type of phobia, right? Specific phobia have their own names, like kynophobia, fear of dogs, arachnophobia, fear of spiders. So you have different specific phobia के subtypes, and right? Obviously, we cannot list every single type of phobias down. Example of specific phobias are given जब तुम black वाली book खोलोगी ना, Cambridge वाली. So when you come onto a chapter for phobia, उसमें types लिखा होगा. Types का एक section बना होगा within the first starting few pages of the paragraph. I guess second page में, I don't remember. वहाँ पे example of specific phobias दी होगी, xenophobias, some things like this. So when you need to talk about types of phobia, obviously you can talk about this specific phobia के different subtypes आती हैं, right? But हम different subtypes के अंदर हम study नहीं करेंगे क्योंकि it's obvious जो यहाँ पे specific object होगा उसके हिसाब से फोबिया का नाम चेंज होता रहेगा. बट इन जनरल सेंस स्पेसिफिक फोबिया इज अ फोबिया जहां पे तुम्हें एक चीज या एक सिचुएशन से डर लगता है.
Now, there are other criteria as well that you need to fulfill. Number one, first criteria is one thing, yeah, one object. Second criteria, obviously, phobia. When we talk about phobia, it is a basic criteria that you are scared and always scared. You're always scared. It's not like 50-50. Hamesha, hamesha, you're going to be scared, right? And the thing that you're scared of, right, you're going to avoid it uh, to an extent. For example, like if a person does not like to be outdoors, some people have a fear of being outdoors, right? So even if they're sick, they are gonna not go to a hospital, they're gonna try not to go to a hospital, they're gonna fake in emergency, they want to avoid being outside, so they're gonna go at any lengths to avoid that situation, right? All right, this is important. Part D. If you think about phobias, right? For example, you might have people who are scared of cats, and you might have people who are not scared of cats, you're scared of heights or something like that. So you're going to realize that जिस चीज से बंदा डरता है, right, the object or the situation that person is scared of doesn't pose itna danger jitna wo person react karta hai. So that fear is out of proportion according to the thing they are scared of. If you are scared of getting killed, that's a real thing. So obviously, उसका fear out of proportion नहीं है. But if you're scared of handkerchief, right, रुमाल से डर लगता है, या you're scared of computers, so that's out of proportion क्योंकि computer actual danger इतना नहीं है जितना तुम्हें डर लग रहा है. So always the anxiety is out of proportion. And yes, there's a timeline for this that is 6 months, right? Why 6 months? Because if you think about this, if you encounter something new, या if you encounter a bad incident, उसका जो साइड इफेक्ट्स या जो ट्रॉमा रहता है वो 6 मंथ तक रहता है. मिसाल के तौर पे इफ़ यू वर हेल्ड एट गन पॉइंट, तुम्हारा मोबाइल छिन गया, वो शायद सोच 6 महीने तक आती रहेगी, एंड दैट्स नॉर्मल. बट वंस इट क्रॉसेस 6 मंथ एंड 6 महीने बाद भी तुम्हें मसला हो रहा है, then कुछ ना कुछ गड़बड़ है. So we give 6 months to people to get used to things. If they don't get used to things, then we're gonna say they have crossed the line and now they might have phobia. So that's specific phobia, fear of one thing or one object, 6 months timeline, and baki subject criteria. Fear is out of proportion, 100% hamesha fear aega, and the person is going to actually avoid that object or the situation. All right. So when we talk about phobias, right? Let's talk about the prevalence, right? Different countries के अंदर different चीज की phobia के percentages ज़्यादा होंगे. For example, अमेरिका में जो specific phobia होगा उसके type अलग होगी, हमारे मुल्क में specific phobia होगा उसकी type अलग रहेगी. So we're not going to talk about subtypes. We're going to generally talk about specific phobia prevalence all over the world. कल्चरल बायस भी डाल सकते हैं हम कि यूएस में मे बी इसको रिकग्नाइज किया जाता हो ज्यादा. Yeah, you can talk about the culture bias as well, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि they're lower in Asian, African, Latin American countries. मतलब जो collectivist culture है वहाँ पे कम है, जो individualist culture है वहाँ पे ज़्यादा है, and that could be because कि वहाँ पे recognize किया जाता है, यहाँ पे शायद recognize नहीं किया जाता, या superstitiously dismiss किया जाता है. But anyways, that is कि Western countries में ज़्यादा है, खासतौर पे यूरोप एंड अमेरिका में, एशियन, अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिका में कम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजेस. बच्चों के अंदर 5%, राइट, वियर्ड, बट जितने बड़े होते हैं उतने परसेंटेज बढ़ जाते हैं, राइट. दैट्स ऑपोजिट व्हाट वी फील कि हमें लगता है बच्चों को ज़्यादा डर लगता है, बट नो, टीनेजर्स के अंदर ज़्यादा डर लगता है, 16% इंक्रीज. एंड जो बूढ़े लोग होते हैं उनके उनके अंदर भी कम है. सो दैट इज एक्सपेक्टेड, बट टीनेजर्स वाला जो स्टेटिस्टिक है, दैट्स द हाईएस्ट. All right, males and females ratio is 2 to 1. Females are likely to more develop specific phobia than males. ठीक है ना? That's the ratio for gender as well. तो females के अंदर ज़्यादा है. uh, so females के अंदर कौन सा ज़्यादा है? They've also specified as well. जो animal जैसे cat, dog या चुपकली, या natural environment as in darkness वगैरह, या specific situations such as height वगैरह, females के अंदर होता है. तो फीमेल्स को ज़्यादा एनिमल रिलेटेड, नेचुरल इन्वायरमेंट या हाइट वगैरह एस्पेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा लगता है. वेरस मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर ब्लड इंजेक्शन ज़्यादा पाया जाता है. मेल्स के अंदर एनिमल वगैरह का ज़्यादा पाया नहीं जाता होगा, फीमेल्स के अंदर ब्लड इंजेक्शन वाला थोड़ा सा है. Alright. So as we said that
अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन स्टडी, ठीक है ना, वहाँ पे जो एशियंस और साउथ अमेरिकन मैक्सिकन वगैरह वहाँ पे स्पेसिफिक फोबिया कम है, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनका ज़्यादा है। ठीक है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। जेंडर डिफरेंसेस हमने ऊपर कवर कर लिया, सो दैट्स देयर टू इट। नाउ वी गोना मूव ऑन। सोशल फोबिया तुम्हारा टॉप सिलेबस में नहीं है, सो वी गोना स्किप दैट। नाउ वी गोना कम अक्रॉस द सेकंड फोबिया तुम्हारे सिलेबस के अंदर, ठीक है ना, दैट इज अगोराफोबिया। So if you understand specific phobia, that is fear of one situation या one object, and बाकी जो अपने उसके क्राइटेरिया हैं 6 महीने वाले, always avoiding, sorry, always causing fear, the person will avoid it, and the fear is out of proportion. So if you understand that, फिर agoraphobia भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि the only difference between agoraphobia and specific phobia is one tiny 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 little thing, and that is क्या हो रहा है ये, agoraphobia कहाँ चली, anxiety 216, yeah, okay. So if you remember, specific phobias is a fear of one object or one situation, right? Specific phobia makes sense. Agoraphobia is a bit different. Agoraphobia के अंदर you're gonna be scared of क्या कहते हैं, one type of scenario, लेकिन उसके 5 different aspects हैं, right? So, for example, if I were to say it in easier words, you're gonna be scared of public places, right? Fear of public places, लेकिन public places बहुत तरीके से आते हैं, बस के अंदर, malls के अंदर, right? So that's why agoraphobia के अंदर there are 5 types of public places. So the 5 types of public places are transportation, open spaces, enclosed spaces, being in a crowd, and being outside of home alone. So people with agoraphobia, right, they have to be scared of at least 2 out of these 5. That's very important, क्योंकि if you remember specific phobia, उसके अंदर आउट ऑफ इसके अंदर सिर्फ एक से डर लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो स्पेसिफिक फोबिया बनता। बट चूंकि यहाँ पे द क्राइटेरिया कम से कम 2 होने चाहिए। इफ यू आर स्केयर ऑफ 2 थिंग्स, फिर वो स्पेसिफिक फोबिया से बाहर आता है। सो नंबर 1, यू नीड टू बी स्केयर ऑफ 2 थिंग्स, लेकिन कौन से 2, एनी 2 नहीं नहीं नहीं, fear of 2 things at least that are public places related, क्योंकि अगर इफ यू scared of public transportation and then if you're scared of pets, फिर वो agoraphobia के अंदर नहीं आता। It is very very important that the two scenarios that you're scared of, ठीक है, are public places related, लाजमी है, क्योंकि agoraphobia का मतलब ही public places related का phobia है। लेकिन क्योंकि specific नहीं है, so you have to be scared of a scenario of a public place that is more than one. ठीक है, so get this distinction clear. More fear of more than one public situation, that's agoraphobia, कम से कम 2. So if you understand this, इसका भी timeline 6 महीने, right? And people are gonna actively avoid these public places, ठीक है ना? People's fear is gonna be out of proportion, सही है? People are gonna have 100% fear always, and 6 महीने का भी timeline है. All right. So why do people avoid these public places? Well, इसके कुछ ना कुछ वजूहात हैं, right? So people avoid these situations, ठीक है ना? Because they feel कि उनको कोई panic attack आ जाएगा in these public places. I'm gonna get into detail what panic attack is. So people are gonna avoid these situations क्योंकि उनको डर लगता है कि panic attack आ जाएगा ना सबके सामने, तो उसकी वजह से आई माइट बी क्या कहते हैं इन डेंजर, या आई माइट एम्बेरस माई सेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि सबके सामने उल्टी आ गई, राइट, एम्बेरसिंग हो गया, ठीक है ना, या सबके सामने फेंट हो गई, ठीक है ना, इनकैपेसिटेशन, सबके सामने फेंट हो गई, मर गई, गिर गई, जो भी है। तो पीपल फियर दीज पब्लिक प्लेसेस क्योंकि उनको डर लगता है कि मुझे पैनिक अटैक आएगा, और पैनिक अटैक होने की वजह से आई माइट गेट इनकैपेसिटेटेड और आई माइट एम्बेरस माई सेल्फ। सही है। सो we're going to talk about what is those panic attack जो लोग बात कर रहे हैं agoraphobia वाले। So panic attack is this, उनको डर लगता है कि मुझे पब्लिक प्लेसेस के अंदर ये चीज़ें ना हो जाए। सही है। पैनिक अटैक इज नॉट अ डिसऑर्डर, सॉरी इट इज़ अ डिसऑर्डर, ठीक है ना, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो पैनिक अटैक स्पेसिफायर हम स्टडी करेंगे, पैनिक अटैक डिसऑर्डर स्टडी नहीं करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक डिसऑर्डर एंड स्पेसिफायर इज दैट स्पेसिफायर is going to come with another phobia। समझो कि किसी कोई फोबिया चल रहा होगा, उसके साथ आके
पैनिक अटैक मिक्स हो गया, स्पेसिफायर बन जाते हैं, राइट। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर अपना ही अलग डिसऑर्डर है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगोराफोबिया के लोग के अंदर शायद अगोराफोबिया के साथ साथ पैनिक अटैक भी हो सकता है साथ, तो उसके अंदर कुछ ये सिम्टम्स हैं। तो people agoraphobia fear these things happening in front of people, such as if you think about this, कि उनको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल देर फीलिंग डिजी, राइट, तो सबके सामने बेहोश होकर गिर गए, तो उनको डर लगेगा कि यार मजाक उड़ाया जाएगा आइंदा। या पीपल माइट फील दैट, क्या कहते हैं, nausea, सबके सामने उल्टी हो जाएगी, राइट, दे माइट fear embarrassing themselves in front of people, right, या fear of losing control, fear of losing control के अंदर people actually feel like as if सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, and they kind of have a mental breakdown, so people fear that happening from people, but that is that, ठीक है ना। So agoraphobia, now you understand it, ठीक है ना। These five situations which are public और places यहाँ related. नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलस brings on the symptoms of a panic attack. नहीं, पैनिक अटैक इसलिए थोड़ा वो है, ओके, पैनिक अटैक इज स्केरी बिकॉज यू डोंट नो व्हेन इट्स गोना कम, कभी भी आ सकता है। सो इफ यू कुड एंटिसिपेट इट, फिर शायद इतना बड़ा मसला नहीं होता। पैनिक अटैक का मसला ये होता है कि यू डोंट नो व्हाट्स गोना ट्रिगर, कभी भी आ सकता है। So that's why it is a bit problematic for these people because they don't know when it's gonna come, so they don't know how to control it. So that's why they fear to avoid these places. So you don't know what's gonna trigger it. So yeah, so summary, uh, five places, public places related उसके अंदर से तुम्हें कम से कम दो चीज़ों का डर लगना है, because you are gonna get scared कि you might embarrass yourself or incapacitate yourself. So that is why you have 100% fear out of public places. हमेशा हमेशा you're gonna avoid these public places, and the fear you have of these public places are 100% gonna be out of proportion to the actual danger you face. एंड कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का टाइमलाइन क्रॉस करना चाहिए। और सो यू माइट आर्ग्यू कि यार हमें तो वैसे ही डर लगता है, नंबर 4 से तो हमें पाकिस्तान में वैसे ही डर लगता है क्योंकि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे बम धमाके होते थे इन क्राउडेड प्लेसेस। तो अगेन वुड दिस क्लासिफाइज अगोराफोबिया? इट डिपेंड्स, कल्चरल बायस यहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग आउटसाइड ऑफ होम अलोन पाकिस्तान में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इफ यू रिलेट तो आ सकता है, बट वाई, बस उसका रीजन पूछना पड़ेगा, वाई आर यू स्केयर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? इफ इट इज दिस, फिर आ सकता है, राइट। लेकिन इफ यू फील लाइक तुम्हारे साथ डाका चोरी हो जाएगा, मोबाइल छिन जाएगा, देन वो अक्रोफोबिया नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई दे हैव क्लैरिफाइड कि यू आर स्केयर्ड ऑफ दिस पब्लिक प्लेसेस नॉट बिकॉज यू आर स्केयर्ड कि तुम्हारे साथ थेफ्ट हो जाएगा, नॉट बिकॉज के तुम बम धमाके मारे जाओगी, बिकॉज तुम्हारे साथ ये होगा, दैट्स व्हाई यू फियर, यू गेट स्केयर्ड ऑफ पब्लिक प्लेसेस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कल्चर बायस का इशू आ सकता था, बट यहाँ पे फिर आने नहीं दिया क्योंकि दे हैव 100% मेक श्योर यहाँ पे असर डर का मकसद ये है और कोई वजह नहीं है जो कल्चर रिलेटेड होंगे। एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेलेंस। All right, so females are like twice as likely as males to experience agoraphobia. So again, specific phobia इसके अंदर females ज़्यादा है, इसके अंदर भी females ज़्यादा है। All right, so for people who are old, right, उनके अंदर specific agoraphobia actually कम आता है, and people who are young उनके अंदर actually ज़्यादा आता है। Teenagers and adults के अंदर थोड़ा percentage ज़्यादा आता है, ठीक है ना। सो प्रिवेलेंस रेट डू नॉट अपीयर टू वेरी सिस्टमैटिकली अक्रॉस कल्चर या रेशियल ग्रुप्स। तो यहाँ पे इन्होंने कहते हैं कि कल्चर बैच नहीं है क्योंकि हर कल्चर के अंदर जो परसेंटेजेस हैं दे काइंड ऑफ इक्वल, ये ऊपर नीचे नहीं होता। सो परसेंटेज वाइज इन एवरी सिंगल कल्चर इज गोना बी इक्वल। So that's why they have ruled out culture bias यहाँ पे, ठीक है, and that is agoraphobia. So it's like so if you kind of have a map in your mind, you have like a hierarchy going on. One thing is specific. One thing के two situations is agoraphobia, right? Now, some जो कि another step in the ladder, so एक और hierarchy के आखिरी step डालते हैं, that is a third disorder in your syllabus known as GAD, generalized anxiety disorder. So agoraphobia से थोड़ा बाहर निकल के आते हैं। Agoraphobia is if when you're scared of many situations, one thing.
इसके अंदर many situation of many things समझ लो. So you're gonna be scared of multiple things of multiple types. ठीक है, तो यहाँ पे it's like how many things की भी unlimited capacity आ गई and how many types of things की भी unlimited capacity आ गई. So we have GAD क्योंकि नाम generalized है, so that makes it easier to understand कि generalized है ये. Alright, so let's suppose कि if you're scared of everything there is, obviously तुम्हें anxiety ज़्यादा होगी and तुम्हें परेशानी भी ज़्यादा होगी, right? So GAD के अंदर, right, we won't classify it as a phobia क्योंकि फायदा नहीं है. यहाँ पे तुम हर चीज की वजह से तुम परेशान हो जाओगे और हर चीज की वजह से तुम्हें वरी हो जाएगा. सो दैट्स जीएडी इन जनरल. You're gonna have so much worry and anxiety, ठीक है ना, about number of things, right? And it's gonna happen. uh, 6 महीने के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 6 महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 into 6 is 180, राइट? आउट ऑफ 180 days, अगर तुम्हें 180 का आधा होता है 90, right? If you have 91 days of this thing happening to you out of 180 days, it's more than 50%, तो तुम्हें GAD कराएंगे. So the way it works is, साइमल्टेनियसली भी हो सकता है. एक मिनट, इसका कोमोर्बिडिटी देखते हैं. The answer of simultaneous comorbidity likely दूसरा एंजाइटी हो सकता है, उनके साथ यूनिपोलर भी हो सकता है, राइट? या तो दूसरी चीज़ों के साथ आ सकता है आराम से, एक दूसरी चीज़ों के साथ आराम से आ सकता है. Alright. So the way it works is, out of those 6 months, 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें ज़्यादा परसेंटेजेस ऑफ दिन में हो ना 6 महीने के अंदर, देन यू क्लासीफाई फॉर जीडी. अगर 6 महीने के अंदर तुम्हें 10-20 दिनों के अंदर हो, टोटल डेज के अंदर हुआ, यू डोंट क्लासीफाई फॉर जीडी. तो बेसिकली द वे दे डू इज, तुम्हें 6 महीने के अंदर कितने दिन ऐसा रहा है जहाँ पे तुम्हें परेशानी हुई है. इफ इट्स मोर देन 90, if you come under GAD. If it's less than 90, if it's less than half, you don't come under GAD. But so obviously if you have anxiety, हर चीज कैसे तुम परेशान होगी, तो obviously इससे परेशान हो रही है क्योंकि you cannot control the worry. Alright, so you might relate कि let's suppose कि अगर तुम हर चीज के बारे में परेशान होती हो, तो you are going to face these symptoms as well. Easily थकन हो जाएगी, fatigue, right? You might feel बेचैन, restless. You cannot concentrate on things, right? डिफरेंट चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी या दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा. चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एजिटेशन, राइट? छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा. योर मसल्स आर गना हर्ट, तुम एंड देयर गना हैव स्टिफनेस, तो मसल टेंशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस. या तो नींद मुश्किल से आएगी, या बहुत ज़्यादा सोगी, या अगर तुम सोती हो तो बार बार उठोगी बीच में, या अगर सोती भी हो तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, मतलब यू विल वेक अप एंड फील लाइक कि मैं सही से नहीं सोई. सो स्लीप डिस्टर्बेंस इन जनरल. सो यू कैन रिलेट कि अगर तुम जिस दिन तुम एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा एंगजाइटी हो रही होती है, तुम्हारे साथ ये हो रहा होगा. बट अनफॉर्चुनेटली पीपल जीएडी, उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक होता है, 6 महीने तक कम अज़ कम उनको हो रहा होता है, ज़्यादा दिनों तक. एंड उनको कितने सिम्टम्स इनमें से होने चाहिए? एटलीस्ट थ्री. एटलीस्ट थ्री. कौन से तीन? एनी थ्री, डजेंट मैटर, बट दे शुड हैव एटलीस्ट थ्री ऑफ these symptoms, and then they classify for GAD. All right, so let's talk about prevalence. मेक सेंस कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो ऑब्वियसली टीनेजर्स के अंदर कम आएगा, लेकिन अडल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, 2.9%, राइट? ऑलराइट, इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज वाइज, ठीक है ना, किसी के अंदर 0.4% ज़्यादा, किसी मुल्क के अंदर ज़्यादा आ रहा है, किसी मुल्क के अंदर कम आ रहा होगा. तो यू कैन ऑलरेडी एक्सपेक्ट अ कल्चर बायस सिनेरियो यहाँ पे. यहाँ इस ये भी फीमेल्स को लाइकली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स. सो तीनों डिसऑर्डर्स के अंदर फीमेल्स को ज़्यादा हो रहा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स. दिस इज मोर क्योंकि एज वाइज, राइट, अडल्टहुड में ज़्यादा पीक कर जाता है और बुढ़ापे में कम हो जाता है एंड बचपन में कम हो जाता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जितना बंदे का पीक लाइफ स्टेज हो रहा होता है अडल्टहुड, वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही होती है, दैट्स व्हाई बंदा ज़्यादा वरी की तरफ जा रहा होता है. और कल्चर बाइस की बात करते हैं. जो यूरोपियन कल्चर्स होते हैं, राइट, वहाँ पे जीएडी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एशियन पीपल, अफ्रीकन पीपल, नेटिव, या वो साउथ अमेरिकन पीपल, राइट, या वो जो हवाई के लोग होते हैं. इट मेक सेंस क्योंकि
हमारे कल्चर्स के अंदर जो एशियन अफ्रीकन या जो लैटिन कल्चर्स होते हैं वहाँ पे कलेक्टिविस्ट कल्चर, तो वहाँ पे बंदे को अगर परेशानी होगी तो वो शायद दूसरों से मशवरा करके सपोर्ट ले सकता है। इंडिविजुअल कल्चर के अंदर बंदे को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, सो ही इज ऑल अलोन विद दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड क्या पता उसकी वजह से ज़्यादा उसको जीएडी हो जाए। सो कल्चर टू कल्चर डिफर करता है, सो देयर इज अ बिट ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हियर यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो डेवलप मुल्क हो चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देखते हैं टॉप डेवलप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहाँ पे ज़्यादा होता है वियरली, एंड जहाँ पे अंडर अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनमें कम हो रहा होता है। सो दैट्स वियर्ड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। क्या मतलब डेवलप कंट्रीज के अंदर वर्क कल्चर शायद इतना टॉक्सिक होगा, दैट्स व्हाई पीपल हैव जीएडी। बट उन्होंने मे इतना बी क्योंकि वो जो जो डेवलप्ड होते हैं वो इन चीजों को रिकग्नाइज करते हैं ज्यादा, क्योंकि दे आर मोर अवेयर ऑफ थिंग्स। Yep, you can also say that कि शायद वहाँ पे like mental health facility इतनी अच्छी है कि पकड़ लेते हैं, जहाँ पे कोई नहीं पकड़ पाता, तो that's why people go undiagnosed, जब भी हमें percentage इतने सही से नहीं मिलता। You can talk about that as well. So yes, you are right, there are different factors, इन्होंने यहाँ पे highlight नहीं किया हुआ भारत। So that is GAD and how it differs with different people and different culture, different ages and different genders. Is there any confusion in all three disorders that we have discussed so far? GAD, specific, phobia, and agoraphobia. All right. All right, so if that is clear, to फिर we're gonna move on to क्या कहते हैं, what you call it, the majors, right? So we're gonna talk about majors that you have to major phobia in your syllabus. So तुम्हारे syllabus के अंदर like OCD के अंदर दो टेस्ट थे, यहाँ पे दो टेस्ट होंगे। So the first one is GAD7, right? नाम से पता चल रहा है कि कौन सी चीज मेजर हो गई। GAD7, GAD7, राइट, क्या कहते हैं, ठीक है ना, देर आर 7 क्वेश्चंस इनसाइड दिस, दैट्स व्हाई देयर नेम है GAD7। 7 क्वेश्चन है और GAD के बारे में मालूम करता है। तो GAD7 इजी रिमेंबर, GAD के बारे में 7 क्वेश्चंस है। सो बेसिकली, ठीक है ना, ये ऑनलाइन फ्री में मिल जाता है, राइट? सो इट्स वेरी वेरी चीप, वाइडली अवेलेबल। सो यू कैन से दैट इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर किसी को फ्री में मिल जाता है, किसी को पैसे देने नहीं पड़ता इसके। सो द पर्सन रीड्स दिस, पिछले 2 हफ्ते के अंदर आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए। सो द मैक्सिमम टाइम स्पैन यू कैन गो बैक इज 2 वीक्स। 2 वीक्स से पीछे आप जा नहीं सकते। सो फीलिंग नर्वस हुई है, worrying के बारे में, worrying about different things, relaxing, restless, annoyed, and feeling afraid as if something awful might happen. Makes sense, क्योंकि symptoms ही है, तो आप symptoms के बारे में ही सवाल पूछोगे। Alright, so this is a closed-ended questionnaire, क्योंकि हर question के आगे choices दी हुई हैं, not at all severe, ये वगैरह वगैरह। So not at all is 0, not at all 0, several days is 1, more than half the day is 2, and nearly every day is 3। तो हर question के सामने 0 से लेके 3 तक आंसर चॉइस दिया होगा। जो पिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिक दिस वन, तो यहाँ पे मेरा 3 मार्क हो जाएगा। सेम फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन। सो इफ लेट्स सपोज ये जनरल डायग्नोसिस के लिए होगा, ये प्रॉपर जिस तरह स्पेसिफिक मतलब फर्दर रेफरल के लिए यूज हो सकता है कि एक बेस मिल जाए उनको, डॉक्टर्स को, प्रैक्टिशनर्स को, कि अब इसको ये ज्यादा आ रहा है, तो मतलब वो एक स्पेसिफिक साइट पे रेफरल दे दे। अच्छा, लाइक योर क्वेश्चन, मैं एक बार दो दो चीज़ समझ में आया क्वेश्चन से। आर यू सेइंग कि बाय दिस GAD7 क्वेश्चनर, because there are different symptoms listed down, a therapist can find out कि मुझे कौन से symptoms के ऊपर काम करना चाहिए, या you're saying कि हम इस क्वेश्चनर से बंदे को डायग्नोज कर सकते हैं, कौन सा वाला? मतलब यू रिकग्नाइज के कौन से सिम्टम्स आपके आपके मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के कौन से सिम्टम्स ज्यादा अपीयर हो रहे हैं। Alright, so वो थेरेपिस्ट का काम होगा when they make the person fill it out। लेकिन एक अजीब बात ये कि a therapist will never use GAD7। नहीं, थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। सो फिर ये क्या सीन है इसका? होता सी, इफ यू थिंक अबाउट दिस, जितने हमने क्वेश्चनर किए हैं OCD के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, आई थिंक ये किए, और दिस इज वेरी वेरी बेसिक, इट्स सो बेसिक कि इससे आप डायग्नोज नहीं कर सकते।
इट्स वेरी बेसिक, तो इट्स नॉट इन डेप्थ। 7 क्वेश्चन आप क्या निकालो, कुछ नहीं निकालो, बस इतना पता चलेगा बंदा कितना जीडी की सिवियरिटी रखता है। सो दिस इज देन यूज बाय पीपल who are not psychologists or psychiatrists. This is used by people who are medical practitioners, डॉक्टर्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो सकता है कि लोग शायद, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम्स फिजिकल है ना, नींद नहीं आ रही, मसल में दर्द हो रहा है, फिजिकल है, तो चांसेस आर कि डॉक्टर्स के पास भी लोग जीडी लेके जाएंगे। तो इफ अ डॉक्टर सस्पेक्ट्स के यार मेरे पास जो बंदा है ये मेरा केस नहीं है, साइकोलॉजिस्ट का केस है, तो डॉक्टर अपनी तरफ से क्या कर सकता है, उसको GD7 दे सकता है कि यार ये भर दो, सही है। और एक डॉक्टर फिर स्कोर्स कैलकुलेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेट करना। इफ अ डॉक्टर फीस के बंदे का जेडी लेवल इतना ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 3 इज नथिंग, 3 तो एक्सेप्टेबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यार लेट्स सपोज के देखो जितना ज्यादा स्कोर बढ़ाऊंगा इसका वो भी बढ़ता रहेगा, मॉडरेट। अगर मॉडरेट तक आया था ना कब, तो फिर डॉक्टर सोचेगा मुझे डॉक्टर पर रेफर करना चाहिए। सो GD7 इज अ स्क्रीनिंग टूल। स्क्रीनिंग क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जहाँ पे तुम लोग को सेपरेट कर दो, जिसको जेडी है और जिसको जेडी नहीं है। सो वंस द डॉक्टर इज एबल टू फाइंड आउट कि यार इसको है कंसिडर वन जेडी, तो डॉक्टर GD7 के अंदर से ये मालूम करने के बाद अगर इसको मॉडरेट एंजाइटी है या मॉडरेट सबब, फिर उसको बंदे को बोलेगा डॉक्टर के भाई आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास। अगर माइल्ड है, डॉक्टर जो है ही वोंट फील इतना नेसेसरी कि मुझे इसको रेफर करना चाहिए, so doctor won't refer it. So doctor is, so it's a screening tool used by doctors to understand whether मुझे इसको रेफर करना चाहिए नहीं। इसे डायग्नोसिस नहीं कर सकते। डायग्नोसिस के लिए जब बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा अलग से, फिर वो एक लंबा चौड़ा टेस्ट देंगे जिसकी वजह से मुझे 100% पता चलेगा इसको जीडी है करें। सो वन वीकनेस फॉर दिस इज दैट इससे आप डायग्नोस नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्रीनिंग कर सकते हो। वन यूजफुलनेस ऑफ दिस कि भाई इतना आसान है कि आप डॉक्टर को दे सकते हो ताकि वो आपके पास पेशेंट रेफर कर सके। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अदर प्रोफेशंस, ठीक है ना, सच एज डॉक्टर फॉर स्क्रीनिंग। बट इसकी वीकनेस ये कितना बेसिक है आप डायग्नोस नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ्स अलग है, वीकनेस अलग है, बट इट इज़ यूज दैट वे। शायद पाकिस्तान में नहीं होगा सबके पास GD7, तो हमें वैसे पता नहीं चलेगा, बट इट शुड बी विद एवरीवन। Alright, I don't think there's culture bias or anything about this, क्योंकि ये सारे के सारे symptoms ऐसे जो हर किसी culture के अंदर आ सकता है। So it's not culture bias, yes close ended है, तो तुम्हारे पास जो है numerical data आएगा। Total score 21 है, 21 और 0 के बीच में आपका स्कोर होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एंजाइटी आपके पास होगी। Say ना for example, एक मिनट, yeah, so 10 is moderate anxiety, 10 is moderate anxiety, and या 15 से सिवियर एंजाइटी शुरू आती है। 15 एंड अबव इज सिवियर, 10 to 15 is moderate, 5 to 10 is like what mild, and 0 to 5 is like normal. So ये range 0 to 5 is normal, uh, sorry 0 to 4 is normal, 5 to 9 is mild, 9 to 14 is moderate, and 15 and above is severe. So मॉडरेट वाला थोड़ा खतरनाक होता है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे तुम्हें रेंजेस याद करने पड़ेंगे, राइट। तुम्हारे बुक के अंदर रेंजेस उन्होंने दी हुई हैं कि हर स्कोर का क्या मतलब होता है। यहाँ पे भी दिया होगा, या यहाँ पे भी दिया हुआ है 5, 10, 15 कट ऑफ माइल्ड मॉडरेट सिवियर। 10 से ज़्यादा होगा फिर आप रेफर करोगे, यूज एज अ स्क्रीनिंग टूल, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर इज नो अदर वर्जन ऑफ अ GD7 का एक ही वर्जन है, राइट। सो और कोई वर्जन नहीं है, तो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर किड्स आई गेस, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के अंदर से जीडीज सारे के सिम्टम अलग होंगे, ज़्यादातर अडल्ट के ऊपर यूज़ होता है। इट्स नॉट ओपन एंडेड, सो पेशेंट ये समझ में आ जाएगा बंदे को कितना जीडी के सिम्टम्स हैं, लेकिन क्यों है वजूहात समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। सो इसके अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ क्या होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन के? टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी, एज इन तुमने आज इसको टेस्ट किया, बंदे का स्कोर 15 है, कल करोगी, इससे पता चल जाएगा बंदे का स्कोर कंसिस्टेंट है कि नहीं। सो यू कैन टेस्ट हिम वंस, टेस्ट हिम अगेन,
दोनों बार you're gonna compare the score से पता चल जाएगा बंदे का स्कोर वेरी होता है कि नहीं. Test retest reliability. All right. Yeah. So that's it for GAD. इतना लंबा इतना complex नहीं है. It's very basic. So that is GAD 7. All right. उसके बाद we have another question है, ठीक है ना? That is gonna be known as the BIPI blood injection phobia inventory. ये शायद तुम्हारे उसमें नहीं है. What you call it? ब्लैक बुक में नहीं है. ये तुम्हें मिलेगा ऑक्सफोर्ड की किताब में, राइट? अगर ऑक्सफोर्ड किताब नहीं फिर हम क्या करेंगे? होल्ड ऑन, आई एम गोना रिट्रीव फ्रॉम व्हाट्सएप में निकालता हूँ, देन आई एम गोना सेंड इट टू यू ऑल ऑन दिस ग्रुप सो यू कैन सी इट. क्या करना चाहिए मुझे? Yeah. Alright, so इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है. I'm sorry for the, अगर इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है, राइट? मैं तो एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे ग्रुप में भेज देता हूँ so you guys can see it as well. ठीक है ना? For referral बाद में मैंने यहाँ पे भेज दिया. Alright. So this is the BIPI, right? Or this is one part of BIPI. ऑक्सफोर्ड की बुक में भी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. So I'll try my best कि तुम्हें चीज़ें नज़र आ जाए. सही ना, कैमरा इतना क्लियर नहीं था. Alright, so basically यहाँ पे क्या है, you can see कि यहाँ पे symptoms हैं. इन यहाँ पे सिचुएशन सिम्टम्स ऐसे जा रहे होंगे, लाइक सिम्टम्स आर गोना गो वर्टिकल जिस तरह से मैंने क्वेश्चनर खोला हुआ है, एंड सिचुएशंस आर गोना गो हॉरिजॉन्टल जिस तरह से मैंने क्वेश्चनर खोला हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो यहाँ पे अगेन प्लीज रिमेंबर कि ये ब्लड एंड इंजेक्शन के बारे में, एज द नेम है ब्लड इंजेक्शन फोबिया इन्वेंटरी. सो द क्वेश्चंस आर गोना बी ब्लड एंड इंजेक्शन related. So the situation is that when I see an injured person after an accident bleeding in the street or on TV, blurred, but I remember that when the first question situation is when I see an injured person after an accident bleeding in the road or on TV. So it's basically seeing a bleeding person, right, after an accident. So this is the situation. उसके सामने ये symptoms हैं, cognitive responses are physiological and behavioral. As in, if you look at that, if you see a person bleeding on TV or in front of you, I don't think I will be able to bear the situation, right? So ये वाला डब्बा जो है, ठीक है ना, ये वाला जहाँ पे मेरा माउस है, right? I hope you can see the mouse. तो इसके अंदर you're gonna mark it from 0 से लेकर 3. जितना intense होगा उतना ज़्यादा. So for this situation, ठीक है ना, you're gonna have to answer many symptoms, cognitive responses, physiological responses, behavioral responses. For example, if you see someone bleeding on the street, right? I avoid it. I avoid going. I avoid that situation. My hands and neck shake. जितना ज़्यादा हैंड्स एंड लेग शेक करते होंगे 0 से लेकर 3 तक तुम्हें यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होगा. Let's talk about physiological. When you see a person who's bleeding on TV or on road after they have an injury, do you faint? I faint, or do you feel a lump on your throat? Do you feel a stomach discomfort? Do you breathe more quickly? Your muscles start to tense up. जो भी होगा appropriate wise 0 से लेकर 3 तक यहाँ पर रिस्पॉन्स दोगे. मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि the time is going to end in 1 minute, so I'm going to be right back with you. I'm going to resend the link.